everyone, welcome to my channel PI Fly. I hope you guys are doing great and going for the interview. So I have already updated vacancies month on my channel. Do not forget to watch that video. Going to like add on my I button and video के end में भी आपको वो video मिल जाएगी vacancies वाली. अगर आप first time मेरा video देख रही हो तो please subscribe ज़रूर कर लीजिएगा. पहले भी देख रखी हो, subscribe नहीं करा है तो आज कर देना, ठीक है? So guys, this is the original website of IndiGo Airline where you can see the vacancies by IndiGo updated for cabin crew. ठीक है, so I'm going to give you the link, this link in the description box. So what I'm going to talk about in this video through the help of voiceover, because I have seen IndiGo have updated their new website things, new vacancies, new procedures, new process for the online interview. Online interview, I'm not talking about any offline interview. Like if your locations are not mentioned in the walk-in interview and you want to go for online virtual interview, and then you want to appear for the interview after the selection, after all the process, so this is your chance, this is the opportunity. Do not miss it, because we never know when IndiGo will stop their hiring, so just grab the opportunity. So what I'm going to help you out in this, as you can see here, shortlisted candidate will receive an invitation for an in-person interview. Here you can see, click here to apply, and here this is the link, you have to click on it. You will click on the link, this is the interface. You will see this these are the lines: recruitment process, descriptions, dates and deadlines. So I'm going to help you. As you can see here, this they have written incomplete application. This is why, because I have completed my application, and then during the online interview, like online process, I skipped the button because I do not want to appear for it normally, because I was just checking out the application process is new or I can apply or not, because application abhi incomplete hai. But I will also show you the questions, or I will help you to know the questions in the next video. But abhi aapko application process जाननी बहुत ज़रूरी है. So I'm just scrolling it down, and you can see here IndiGo's cabin crew online. Email ID, your email ID will show you here, and then you can see freshers and experience from non-aviation industry can also apply. Even if you are experienced person and you have experience in different field, it is not related to aviation, you can still apply. Okay? And then you can see registration and screening process. So everything in details they have written here. Also, I have a screenshot where I have applied, and I am going to help you with that screenshot also, like when you will apply, what kind of process, what kind of things it will show you on the screen. Suppose it is showing incomplete application, but there you will show apply option. So let me share that screen also with you people. Here यहाँ पे आपको क्विक अप्लाई सा दिखेगा, उस पर क्विक अप्लाई पे क्लिक करने के साथ साथ ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वो आपको यहाँ पे ऐसे पॉपअप हो जाएगी कि अपना पहला नाम डालो, लास्ट नेम डालो. ठीक है, सारी डिटेल्स डालने के बाद में मैंने टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करी है, एंड देन आई हैव क्लिक द सेव बटन. उसके बाद में मुझे एक आप कह लो कि OTP आती है, एंड आफ्टर दैट OTP, जो OTP मुझे जीमेल पे आए, जीमेल पे रिसीव हुई. आपकी जीमेल जेन्युइन होनी चाहिए, चलते रहना चाहिए, ताकि आप OTP रिसीव करो. OTP जैसे जीमेल पे आ जाती है, मेरा आधार वेरीफाई यहाँ पे हो जा रहा है. फिर मैं नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में जब मैं आगे जा रही हूँ तो मुझे कैमरा के ऑप्शंस आ रहे हैं कि अपनी एक अच्छी सी फ़ोटो क्लिक करो, एंड जैसी फ़ोटो क्लिक करके आप ओके करते हो, you have to click go for the assessment process after that. So assessment process वाला जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में ट्राई करूँगी बताने का, बिकॉज आपको टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, सो ये रहा, आपको टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे. पहले क्या था कि दे यूज टू आस्क यू ओनली 5 क्वेश्चंस, 1 इज़ इन हिंदी एंड 4 is for in English. So now what they are going to do, they are going to ask you 10 questions, 1 is in Hindi and all the 9 questions are in English, and also camera based interview. So you have to wear the earbuds or earphone or headphone, so that you will, and you have to sit somewhere properly so that you will face the camera, you will answer the questions, and then you will go for one and one, and then you can like start submitting all the questions, and at the end you have to submit your video after one Hindi question. That's it. So all the 10 questions you have to complete it with like if you want to go for in a one way, you can just go for it. And I have just submitted the application, and while clicking the
फ़ोटो लाइक कैमरा जब पॉपअप होती है, तो मैं वहाँ से वापस आ गई। वहाँ से वापस भी आप आ सकते हो, अगर आप रेडी नहीं हो तो आप एप्लीकेशन रेडी करके रख लो एंड आप थोड़े दिन बाद भी आराम से बैठ के अप्लाई मतलब आप इंटरव्यू दे सकते हो कैमरा बेस होके। जैसे आज आप सोचोगे कि मैं कल फ्री रहूँगी शाम के 5 बजे से, तो जस्ट वेयर द शर्ट, बी लाइक वेयर द फॉर्मल लिटिल बिट, डू हल्का सा मेकअप, that's it, and then sit for the interview, give the interview, they will ask you the questions and then you have to answer it and then submit it, because इसकी डेडलाइन अभी नहीं है, 1 मंथ तक एप्लीकेशन ओपन है। सो कोशिश करना कि 7 डेज़ के अंदर में आप अपना असेसमेंट दे दो, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपसे पहले कोई अच्छा इंटरव्यू कर रही है तो उनको ज़्यादा जल्दी चांस मिलेगा। आप इंतज़ार करते रह जाओगे तो आपको हो सकता है लेट मिले, या फिर हो सकता है आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए वो मेल ही ना करे। सो डोंट वेट फॉर मोर डेज, जस्ट अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट कि क्वेश्चंस क्या है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अलग तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन में मदद करूँ, बिकॉज कॉपीराइट इशू हो जाती है। लास्ट टाइम इंडिगो रिमूव्ड माई वीडियो, सो लेट्स सी कि मैं किस तरह से आपकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा बहुत हिंट दे दूँ आप लोगों को। So let me check how I'm going to help you all so that you people will get help and people can sit for the interview. Till that, if you are getting help from somewhere or somehow, just let me know in the comment section what kind of questions they have asked you. If you have already appeared for the interview, let me know in the comment section so that other candidates will get help from it, guys. Stay tuned on my channel, subscribe it, like this video, share this video to your friends and family, and video do share my channel. I hope they will feel nice, they will feel comfortable, they will feel confident while watching my videos, making sure of it, guys. So thanks for watching. Do not forget to like this video.